Very good evening, guys. Can you all hear me and see me? Just give me 10 seconds. We had a. Can you all see me and hear me? Sorry, we had a small little technical issue of. Right? Good evening. Good evening. Art, to see, this is what it takes to not give up. And everybody was telling me, man, you're tired and you traveled today and don't take a class. And I was like, no, I don't want to give up. I don't want to give up. I'm very, very good. And that's all that it takes. That's all. That little is what it takes to not give up and to take a class and to give up and take a class. So I've got 100 plus questions from every single chapter, every single topic, 100 plus questions. चलते हैं आगे. Good evening. Thanks, Kripa. Let's move forward. And I know it's going to get colder by the day. It's very, very cold in certain parts of North India already. But, we cannot give up and we need to study. So, chale, can we move ahead? Yes. Oh, we had a small little, Sejal ji, आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? We had a small little technical issue and it's over now. So I missed you 2022. Did you miss me too? But don't you worry, we are not going to have any more cancellations. Even today, did you see that? We took the class. We are there with the class. Chaliye, I am very good. And because I've been traveling and doing a lot of work and a lot of traveling in the last few days, so thoda sa sometimes you get a little tired and fatigued, but that's okay. Missed you as well. Finally joined everybody. So can I start the class? स्टार्ट कर दें एवरीबडी. चलिए फटाफट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मेंटी का भी थोड़ा मेकओवर हो रहा है. मेंटी जी इज गोइंग टू बी बैक विद अ मेकओवर एंड तब तक आपको स्लाइड शो पे सारी चीजों के आंसर देने पड़ेंगे. व्हाट इज नॉट फेयर? Yes, Adya ji, yes. And how's my new haircut? That you tell me in the comment section. राइट मेरे से ज्यादा आप मेरे हेयर कट के लिए वर्ड रहते हैं एंड बातें करते रहते हैं उसके बारे में. सो हाउ इज इट? यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, थैंक्स परमजीत जी. चलिए कल मैं एनिमल किंगडम का फाइलम कोऑर्डिनेटर करवाऊंगी और कल आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के भी क्विज करवाए जाएंगे. कूल, ऑसम, नाइस. थैंक्स आद्या जी. Chaliye, let us move ahead. So make sure that you're liking, make sure that you're sharing, make sure that you're subscribing, make sure that you hit the like button, hit the share button, hit the subscribe button. ठीक है जी, चले. ओके, आज मेंटी नहीं होगा. मेंटी होगा बेटा. मेंटी का मेकओवर हो रहा है तो मेंटी मेकओवर के बाद होगा. अभी बिना मेंटी के हम एमसीक्यूज कराएंगे. थैंक्स वर्णा. टारगेट नीट 2021. आपको एक बहुत बड़ा ऑफर के बारे में बता दूं बिफोर आई एक्चुअली मूव फॉरवर्ड. और वो ऑफर क्या है कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को हर किसी को 80, 85, 87 इस टाइप के ऑप्शन मिल रहे हैं. 700 रुपीज में आप पूरा 12th मेरे से पढ़ सकते हैं. 850 रुपीज में पढ़ सकते हैं. इट इज द चीपेस्ट ऑफर एवर बिकॉज इट इज अ वेरी स्पेशल ऑफर ऑन चिल्ड्रंस डे. सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी. PCBZ इंग्लिश हिंदी सेपरेट बैचेस. क्लास में आपके डाउट सॉल्व होंगे. क्लास के बाद आपके डाउट सॉल्व होंगे. यू मास्टर द कॉन्सेप्ट्स विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया एंड यू लर्न फ्रॉम योर होम. आपको पता है 5000 आवर्स टीचिंग के हैं. 10,000 से ज्यादा MCQs एंड 25 टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. ये सारी चीजें. कैन यू सी द प्राइस? Just tell me. 850 rupees with 50% off, guys. Don't miss this. इसके बाद ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा. कोड आपका VD Pro है. 1.61 ₹2 भी नहीं है पर आवर. 800 रुपीज मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुअलॉजी पूरे महीने का सिर्फ 200 रुपीज में मिल रहा है. 200 रुपीज. दैट्स अबाउट इट. कोड आपका VD Pro. तो 12th वाले बच्चों रेडी फॉर द क्वेश्चन. KVPY भी अभी आपको पता है नई डेट्स आने वाली. KVPY पे भी ऑफ है. बोर्ड एग्जाम्स पर भी ऑफ है. एवरीथिंग. एंड आप एक वेदांतु का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं जो वेडनेसडे को होता है. डन. चलिए इसके बारे में भी मैं और बात भी करूंगी. सैट, VM सैट के बारे में. हाउ डू रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन. क्लास 12th के बच्चे इसको दे सकते हैं. क्लास 11th के बच्चे इसको दे सकते हैं और आपको detailed scholarship मिलेंगी. But also remember the code VD Pro. After that you will also get some super amazing prizes. But सबसे पहले आ रहे हैं क्वेश्चंस पे. उसके बाद मैं VM सैट दोबारा समझाऊंगी. ये रहा आपके चैप्टर का क्वेश्चन. चलो
नीट बोर्ड्स बी प्रिपेयर्ड. चलिए बताइए. क्रॉस pollination is a transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of genetically different flower. It is performed with the help of an external agency which may be abiotic or biotic. Diagram shows the carpel of an insect pollinated flower. Can you see that? Aditi, Adya, Padmash, Sejal, are you all ready? First batao. Ready, ma'am? Ready likh do on the chat section, please. Are you all ready for the quiz? Yes. What is the most likely reason for non-germination of pollen Z? X, Y, Z तीन पोलन है. आपको दिख रहा है Z ने पॉलिनेट नहीं किया है. एम, नीट, मैस्कॉट, इजरम, कम ऑन गाइस. गौरव, रेडी. Why has it not germinated? ABCD option on your screens, please. चलिए बताइए. Why has it not germinated? Pollen grains of X and Y were brought to the stigma earlier. Pollen grain Z was brought by wind while X and Y were brought by insects. Z lacks protrusions that allow it to adhere properly. Or incompatible species. What is the reason? बताइए. बताइए. A, B, C, D on my screen with explanation. Come on. You will find my batches in my courses. Please tell me with reason. Incompatible species. Everybody says that. Incompatibility. Well done. Well done. That means you will do well in your board exams. Next question. Which of the following best describes the function of pollen tube? Pollen के ऊपर questions है? Right? Which of the following best describes the function of pollen tube? Conduit for transport of male gametes from the anther to the ovule. Transfer of male gametes from the stigma to the ovule. Nutrients that serve to nourish the newly formed zygote. It digests the tissues. Pectin इसका काम करता है. Stigma style ovary. बताइए. Anther to ovule या stigma to ovule? A, B, C, D. जीवन कुमार, स्वानंदी, गौरव, पद्मश्री, दिव्या, सक्षम. बताइए. निकिता जी, रंजना जी, बताइए. Come on. Does it move from anther to ovule or stigma to ovule? Pollen tube, stigma to ovule. Answer should be B. Well done. Pollination of a flower in which pollen is carried by an insect. Anemo क्या करता है? Ornitho, entomo या malico? Come on. Pollen is carried by an insect. Very well done. Vanshika, Sejal, Sanvi, Gaurav, Jayashree, Pragati, Shreya ji, Adya ji, Pratibha ji. Animals, Amar, well done. Anemo is by wind. Ornitho is birds. Entomo is insect. Malico is snail. Refer to the given characteristics of some flower. Stamens hang out of the flower, exposing the anther to the wind. Pollen insects are tiny and light. Flower has sweet scent. Flower petals are brightly colored. आप मुझे करेक्ट बता दीजिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए. चलिए. करेक्ट फॉर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स. Insect pollinated flower. Correct. 1, 2, 3, 4. Very good speed of answering, guys. Very, very good speed of answering. I think only 2, C and D. Well done. A and B किसके लिए बताइए. Sanvi, Ishita, what are A and B for? A and B किसके लिए? A and B किसके लिए? Wind pollinated. Pollen kit is generally found in. A and B is for wind pollinated. Pollen kit is generally found in. Anemo, Entomo, Ornitho, Malico. It's very easy to answer. Pollen kit, it has to attach. What is the answer? B, Entomo?
परफेक्ट, परफेक्ट। अब आपको ABCD दिख रहा है? Many adaptations are found in flowers to achieve certain kind of pollination. The pollination achieved by insects is called entomophily. The given diagram shows a cross section of an anther. You can see diathecus, tetrasporangiate, you see epidermis, endothecium, middle layer, tapetum. हमने सब कुछ किया हुआ है. Tell me how many times have we done the theory before? क्यों ये? Why प्रांजल? Questions आप लोग visible नहीं है. Okay. तो हम अपने फोटो को इधर कर देते हैं. अब दिख रहे क्वेश्चंस, अब दिख जाएंगे. ठीक है जी? Done? Is it fine? So many times we've done the theory. Let us do all the MCQs now so that we are really able to do well. अब करिए. Which of the following are the function of Y? Y क्या है? पहले देखो Y क्या है? X microsporangium में Y connective. आशीष ने बता दिया. Y का function बताओ. To carry waste products away from the anther, to supply oxygen to the cells of the anther, to transport food and mineral salts to the anther, to supply water to the anther. बताइए, बताइए. Why? Is Y the connective? Okay. If Y is the connective, what is the function? If Y is the connective, what is the answer? Done? Waste products, supply oxygen, transport food and mineral salts, supply water. C है, D है, क्या है? Well done. C and D only. Transport food and minerals, supply water to the anther. C and D, B option. Done? चलिए. Which of the following most accurately describes the structures found in X? X क्या था? देख लो डायग्राम देखो. Click snapshots. X क्या है? These kind of questions will come in your board exams, in your NEET exams. You have to be very prepared this time. चलो. Two haploid nuclei resulting from meiosis. Two haploid nuclei resulting from mitosis. Two haploid male gametes. They produce abundant quantities of pollen to make up for pollen grains that might be removed by the wind. To make up for pollen grains, question दिख रहा है आपको, sporogenous tissue है. What is the answer? A, B, C, D. Two haploid nuclei. Yes. Resulting from mitosis. Gametes come from mitosis, division. Actually, the answer should be B answer is 100% wrong. So it should be basically it has 4 of the cells N which produce 8 male gametes, right? Male gametes are produced from mitosis, rest it is produced from meiosis. Answer is all correct. Answer ये नहीं है. Done? अब X को आप मैच कीजिए. Likely characters of the structures found in X and stamen of this plant. X, pollen अगर है, abundant light, pendulous stamen, rough surface, non-pendulous. Pendulous किसमें होता है? Anemophily. Oh, done Padmashri very soon. Pendulous which is hanging outside. Pendulous is in wind pollinated which is hanging outside. That is called as pendulous, which is hanging outside. Light and sticky. Coarse and sticky. Pendulous is the one which is hanging outside, right? मैं आप सबके responses पढ़ रही थी.
पेंडुलस होगा विंड पॉलिनेटेड में, विंड पॉलिनेटेड होगा लाइट एंड स्टिकी, राइट। रफ सरफेस पे होगा नॉन पेंडुलस, विंड पॉलिनेटेड में होगा लाइट एंड पेंडुलस। स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स एंड लार्ज अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर्स किस में होते हैं? वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, बताइए। बताइए। एंटोमो इंसेक्ट, ऑर्निथो बर्ड्स, एनिमो विंड, हाइड्रो वाटर। वाटर के लिए तो म्यूसिलेज कवरिंग चाहिए। स्पाइनी और स्टिकी किस पे स्टिक करना है? इंसेक्ट पे। तो आंसर क्या होगा? एंटोमोफिली। आंसर क्या होगा? एंटोमोफिली। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन। In angiosperm, the pollen grains are being transferred from the anther to the stigma and is termed as pollination. This phenomenon was first discovered by a scientist जिनका नाम था Camarius in the end of 17th century. Pollen grains are immobile. They cannot reach the stigma by themselves. Therefore, they depend on an external agency. If the external agency is wind, it's called as anemophily. If the external agency is water, it is called as hydrophily. If the external agency is a snail, it is called as malacophily. If the external agency is a bat, it is called as chiropterophily. If they are birds, it is called as ornithophily. If they are insects, it is called as entomophily. Now, आपको ये figure दिख रहा है. There are two plants of the same species showing different types of pollination. Two flowers of different plants is referred to as allogamy. Same plant, same flower, autogamy. Same plant, different flower, geitonogamy. Is that clear? ठीक है। वन शॉट विल हैपन जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम से पहले कराऊंगी वन शॉट। चलिए इसका जवाब दीजिए। पी क्या है? पी आर अगर सेल्फ है, क्यू है एक से दूसरे में जा रहा है, पी है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। पी क्या है? ओवा, पोलन, न्यूट्रिएंट, सीड। सबसे पहले तो क्या होगा? पोलन ग्रेन। Which of the following statement is correct regarding P, Q and R? Process PQR introduced genetic variability in the offspring of sexually reproducing plants X and Y. Wind serves as agent for process Q if plants X and Y belong to salvia. Salvia के पास, salvia में flower भी होता है, salvia के पास bees भी आती है, liver mechanism भी करता है. Flower of plant X and Y need to produce odor and nectar for completion of process P and Q if they are entomophily. Insect है तो वो बोल रहा है आपको nectar बनाना पड़ेगा. If plant X and Y belong to genus cannabis, grass, then their flowers need to produce sticky and heavy pollens in very small amount of accomplishment of process Q. बताइए. Sticky and heavy pollen in very small amount. बताइए. एंटोमोफिली में ऑब्वियसली आपको पता है पोलन स्टिकी होने चाहिए, विंड में पोलन लाइट होना चाहिए, स्टिकी नहीं होना चाहिए. बताइए, सब कुछ बताइए. चले. बताइए. आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट इट. डन. बी सैल्विया. सैल्विया लिवर मैकेनिज्म बीज करती हैं. पी में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे आएगी बताओ? पी में कहां से आएगी जेनेटिक वेरिएबिलिटी? पी तो आपका सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर है. स्टेटमेंट 1 गलत हो गया. सैल्विया डज एंथोमोफिली इंसेक्ट्स, गलत हो गया. राइट? इज दैट क्लियर?
और आपका करेक्ट स्टेटमेंट है फ्लावर ऑफ प्लांट एक्स एंड वाई नीड टू प्रोड्यूस ओडर एंड नेक्टर फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस पी एंड क्यू इफ दे आर एंटोमोफिलस इंसेक्ट्स। चलो बताओ पी क्यू आर को बताओ। आर सेम, पी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, आर सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट्स। चलो बताओ। I'll continue to do all of them. I will do all of them. Done? Geitonogamy, autogamy are and zero different ones. Chalo. चले? The growth of style brings the stigma in contact of ripe anthers present on the mouth of the corolla tube. Style. Stigma, style, ovary. Xenogeitonocleistohomo. सेम क्लोज ओपन की बात नहीं की है. होमो, होमो, होमो. इज दैट क्लियर? अगला सवाल. Which of given processes represents a type of pollination that would result in greater adaptability of the particular species to potential environment changes? अडेप्ट किसमें करेगा? अडेप्ट उसमें करेगा बच्चों जिसमें वेरिएशंस है. PQR में किसमें वेरिएशंस है? कितना टेढ़े सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं. किसमें वेरिएशंस है? PQR में किसमें वेरिएशंस है? P में है धन्या, Q में है, R में है, किस में है? वेरिएशंस. R कैसे बोल रहे हो बेटा? P is same plant, R is the same flower, Q is different flower. So variations किस में है? Q. Variations are in Q. Xenogamy is Q. Xeno. Divya. Pollen pistil interaction is a group of events that occur from the time एक pollen जो है वो stigma पे deposit होता है till the time it enters the ovule. It is a dynamic process which is checks at several places for promotion or inhibition of pollen growth. Pollen pistil interaction is a safety measure to ensure that illegitimate crossing does not occur, because if it is different species it will not undergo germination. वही लिखा है compatibility and incompatibility of the pollen is determined by specialized proteins. जो कंपैटिबल होगा वही वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ग्रो करेगा. अगर पिस्टिल की ट्यूब कंपैटिबल नहीं है वो ग्रो नहीं करेगी. इट विल नॉट ग्रो. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1. कंपैटिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस. बताइए हु डिसाइड्स कंपैटिबिलिटी? स्टिग्मा डिसाइड करता है, ओवरी डिसाइड करती है, स्टाइल डिसाइड करता है, थैलेमस डिसाइड करता है. ऑब्वियसली स्टिग्मेटिक फ्लूइड. कौन डिसाइड करता है? स्टिग्मा के ऊपर जो पानी होता है वही एंटर करता है जिसकी वजह से इंटाइन स्वेल होती है. इट एंटर्स थ्रू एक्साइन एंड इट कॉजेस स्वेलिंग ऑफ द इंटाइन. इज दैट क्लियर? डू यू वांट टू रीड एंड कम अगेन? कितने बच्चों को लग रहा है मैम मेरे को तो पढ़ के आना चाहिए था मैम? कितने बच्चों को लग रहा है मैम पढ़ के आना चाहिए था? Trifolium, which type of self incompatibility is found? Which type of self incompatibility is found? Gametophytic मतलब गैमीट नहीं होता. स्पोरोफाइटिक, बोथ गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक. बताइए. अगला कल आपको मॉलिक्यूलर बेसिस पर मैं आपके पूरे मैराथन में लग रहा हूँ. मुझे पढ़कर आना चाहिए. देखो कितने अच्छे से आपका सॉल्व होता. इट इज गैमेटोफाइटिक. चलो और क्वेश्चन करो. 20 क्वेश्चन तो करवाती हूँ.
Yes, Betashu. Incorrect statement. In Asteraceae, incompatibility is due to the genotype of the sporophytic stigmatic tissue. Asteraceae, lily family, daisy family. Liliaceae, Asteraceae, अलग अलग families होती है ना. Lilies, Liliaceae. Sunflowers, Asteraceae, Brassicaceae, Sarso. Incompatibility is due to the genotype of the pollen. Nature has imposed self-incompatibility to avoid highly homozygous individuals which have very low survival value. None of these. Incorrect. Brassicaceae, it is not genotype of the pollen, it is a species incompatibility. Answer will be B. 18th. चलिए. Which of the following examples are of self incompatibility? हमेशा खुद का पोलन आएगा, कंपैटिबल नहीं होगा. किसी और प्लांट का आएगा ऑफ द सेम स्पीशीज. टोबैको, पोटैटो, क्रूसीफर या ऑल ऑफ दीज. टोबैको, पोटैटो, क्रूसीफर या ऑल ऑफ दीज. याद करो. इसके बाद मैंने आपको वो भी करवाया हुआ है बेटा. मैंने आपको कितने क्वेश्चंस कराए. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कितनी बार कराए. कल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ के आओगे. पक्का पढ़ के आओगे. 20th 19th क्वेश्चन से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है. प्रॉमिस करो पढ़ कर आओगे मैम. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नाउ टेल मी वन थिंग. आपको अगर मैं ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक, आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी टॉपिक. शुड आई रीस्टार्ट टुमारोज क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 देन मूव टू मॉलिक्यूलर बेसिस? कल पक्का पढ़ कर आओगे. इसके बाद देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ गया. राइट. पूरा 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, पक्का पढ़ कर आओगे. देखो बेटा, ऐसे तुक्के मार के कोई फायदा नहीं है. तुक्के तो मारते रहोगे. रात के 9 बजे बैठे हुए हैं, तुक्के मार रहे हो ऐसे अंधा धुंध अंधेरे में गोली चला रहे हो. उसका कोई फायदा नहीं है. अच्छे से पढ़ कर आओ, रिवाइज करो, तब तो फायदा भी है ना. देखो आज कितनी देर आई ट्राइड टू डू द क्लास पृथ्वीराज एंड देन आई फाइनली टुक द क्लास एंड यू नो आई बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग 8 o'clock. आई रीच्ड एट 3 o'clock. आई डिड नॉट कैंसिल एनी क्लास एंड यू नो आई डोंट हैव अ बॉस. ऐसा तो नहीं है बायोटॉनिक पे मेरे सर पे कोई नाच रहा है और मुझे बोल रहा है वानी तुमने क्लास कैसे नहीं ली. इट इज माई चैनल. मैं चाहे जब क्लास लूँ, चाहे जब क्लास ना लूँ, कितने बजे भी लूँ, जो भी करूँ, बट आई एम स्टिल डूइंग इट. सो विल यू ऑल्सो डू द सेम? प्रॉमिस करो. पढ़कर आओगे अच्छे से. कल आपके 2 टॉपिक्स का टेस्ट है. ये पूरा मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली. देखो क्वेश्चन इस टाइप के हैं. राइट. एपिडर्मिस एंडोथेलियम वाले क्वेश्चन है. यहाँ से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस पे करूंगी. प्रॉमिस. दोनों टॉपिक्स करके आओगे, मॉलिक्यूलर बेसिस करके आओगे और ये वाला बचा हुआ टॉपिक करके आओगे, तो फिर फायदा है. इसके 20 क्वेश्चंस बचे हैं अभी. और मैं आपको देखो कितनी स्लाइड्स बनाकर लाई हूं मैं आपके लिए. देखो 100+ स्लाइड्स बनाकर लाई हूं. इस स्लाइड का नंबर क्या आपको दिखाई दे रहा है बताओ. इस स्लाइड का नंबर क्या दिख रहा है यहाँ. ये मुझे बताओ. स्लाइड का नंबर देख के स्लाइड का नंबर क्या दिख रहा है बताओ. चलो. ओके पद्मश्री 104 दिख रहा है. एक ही क्लास में 100+ स्लाइड्स. आई हैव गॉट इट. यू हैव टू रीड एंड कम. कल मैं 100+ स्लाइड्स मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए भी बनाकर लाऊंगी, इसके लिए भी बनाकर लाऊंगी. यू विल रीड इट कंप्लीटली. प्रॉमिस. And come prepared for the class. You will not come like this. Most of you will come prepared for the class. And by the time we will also have Menti with a makeover. Done? See you tomorrow 9 p.m. and for 11th revision, see you tomorrow at 7 p.m. Okay? Bye. Good night. Take care. And don't forget the offer will get over within 1 or 2 days. Come to our regular classes just for 850 rupees with the code VDPro. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लिक कीजिए, VD Pro कोड लगाइए और आ जाइए. बाय गाइस. बाय.